Sairam sir. So let us chant Omkar 3 times, then we shall begin. Om. Sairam. So, in this chapter of the small business, there are four parts basically. One is the small business meaning, importance. No. Second one is the entrepreneurship development. Third one is the intellectual property rights. And fourth one is the Startup India scheme. Am I audible, Sairam? Yes, sir. So now we have already discussed what is the meaning of entrepreneurship and what are the features of entrepreneurship. Now process अभी लिखो जो पहले लिखा था वो ठीक नहीं था process अब लिखा रहा हूँ आपको लिखी process of entrepreneurship. इसमें बताता हूँ आपको process of entrepreneurship. Try to share देखता हूँ शेयर करके होता है कि नहीं प्रेजेंट ना क्या कंडीशन नेट की हो गया तो अच्छी बात है शेयर ओके हाँ हो रहा है canvas okay so now screen is visible Sairam the screen is visible or not Yes, sir. this is process of entrepreneurship okay in this process the first step is self discovery first step in the process of entrepreneurship development is the self discovery what is the meaning of self discovery the person we have already discussed the meaning of entrepreneurship it is the process of setting up a new business for our own okay that is entrepreneurship so the person who wants to start a new business or the person who wants to become an entrepreneur he has to discover himself or herself and he has to analyze about himself that what strengths and weaknesses that person has okay means whether that person have some idea about the business the person is able to take business decisions will have sufficient funds or not so this type of self discovery is needed so to make be sure that you are ready for starting business you have the potential you have the risk bearing capacity that is necessary for running a business is it clear Sairam so that is called self discovery Sairam so that self discovery means analysis of our own are we able to start a new business do we have that skill which is needed for running a successful business what are our strengths what are our limitations so we can improve upon our limitations okay then second is identifying opportunities when we are ready to start business we are confident that we can start a business the next step we have to go that's called identifying the opportunities okay identifying the opportunities means that we have to search that in which area we can have an opportunity successful business
So there are many areas, different areas. So we have to conduct survey, we have to find out and try to understand that in which field there is more demand, people need more products or services, and we can we can start business in that area of that field. That is called the opportunities. Identify the opportunities, what opportunities are available in the market, in which field of business we have the business opportunities, so we can start a new business and can get success. Sairam. Okay, am I audible? आवाज आ रही है क्या मेरी? Yes, sir. Third step is that now if we come to some idea, here we will decide the field in which we want to enter, then evaluating the idea. Now we have to evaluate the idea. Evaluating the idea. Analyzing or evaluating the idea, whatever idea we have got or whatever field of business we have decided to enter in. Now we have to have detailed investigation of that field of the idea. We have to discuss with experts or with those people who have experience in that area, and we have to analyze what difficulties will come in that area of that specific field of business, and we have to understand our own limitations and what are the expectations of the customers that we have to try to understand before entering into a specific field. So whatever idea we have decided, whatever field of business we have decided, now we have to analyze that specific field so we can get full idea, complete understanding of that field of business. So we can either improve upon existing products or we can offer a new product to the customers. Okay. Then planning. Now if we are sure with idea, we are confirmed, we have decided that we will enter in this field of business, then we have to make the plans for that business. Planning stage, what to do in planning, we have to conduct research, make the plans, make the strategy. Planning means what to do, how to do, when to do. So we have to decide what product we will make. What will be the features of our product, what we will provide, what will be the features of our service, and all those decisions which are necessary to start the work. That is to be decided in advance. That is called planning. So if we are entering in a specific field of business, suppose I have decided to start a manufacturing unit of biscuits. So now I have to decide that I have to make the plans that how much, what will be the plant size, how much production I will do, what will be the packing size of my biscuits, what will be the target group of biscuits, how will I send the biscuits to the customers or retailers or wholesalers. That all plans we have to make in advance. Okay, that is necessary. Then after planning, now you are ready, you have made the plans, everything is ready. Now you have to go for raising funds, raising startup. That is raising startup capital. स्टार्टअप इंडिया में आप डिफरेंट सोर्सेज से ला सकते हैं या अपना खुद कैपिटल होता है तो आप ले सकते हैं. तो रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल. Startup capital means capital needed for starting the business. Raising startup capital means capital which is needed for starting the business. So there are many sources, different sources available depending on nature or field of business we decided. So according to the field of business, we have to discuss or decide that from which sources we can get the capital or funds for starting this business. It's called as raising startup capital. Okay. Then startup, after startup getting startup capital, क्या करना है? आपको बिजनेस चालू हो गया तो क्या करेंगे? आप स्टार्ट करिए, कैपिटल भी मिल गई, प्लान भी आपके पास है, बिजनेस है ना, बिजनेस स्टार्ट करेंगे. प्लान्स आर रेडी, आइडियाज आर परफेक्ट, you have got the capital and start business. What will you do in that start the business? And growth means उसके बाद expanding the size of business. Next step is growth. Growth means increasing size, number of products, number of customers,
number of introduced. So there are many dimensions of growth. So if we are capable, we keep on growing our business, developing new branches, new areas, increasing the number of products, add more number of customers, employing more number of employees. That we keep on doing. That is called growth. You know? So that we try. Business has immense potential of growth, no limit to grow. Business can grow up to any size. There is no limitation on growth. This is the area where there is a unlimited scope of growth. You can grow up to any size. Then harvest. Harvest means here what? फसल काटना. फसल काटने का मतलब क्या है यहाँ पर? Harvest means that you sell your product and earn profit. Fulfill your dreams by earning profits. So whatever you have decided to achieve, you will try to achieve by this enterprise by selling the product or by earning the profits, so that your dream will come to your dream will come true. That is the harvest. So selling the product, increasing more and increasing sales, and earning more and more profits. That is the harvesting. So this is the process of entrepreneurship. So if you want to be an entrepreneur, you have to go through this process. So first of all, you have to discover about yourself. Am I a fit person for running a business or not? Do I have the qualities which are needed for running a successful business? If answer is yes, then you have to search out in which field are more business opportunities. There are chances of success, more chances of success. Then choose that specific field or area. Then evaluate that idea or field of business in detail. Make your plans. Arrange the. If you don't have your own capital, start the business, expand the business, growing, and keep on earning the profit. That is harvesting. Is it clear? This process of start, entrepreneurship is clear. Sairam. Yes, sir. Now next topic is the Startup India. Startup India scheme. This is the supportive scheme to this entrepreneurship. इसी को सपोर्ट करता है स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. इसका नाम दिया स्टार्टअप इंडिया स्कीम. After being the prime minister of the country, Modi has started many new scheme. है ना? Startup India scheme. Many schemes and missions are launched by this government. आपने बहुत सारे सुने होंगे. स्वच्छ भारत मिशन, है ना? क्या मतलब उसमें? स्वच्छ भारत मिशन में क्या था? स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, है ना? Many schemes are launched by government, especially to make the country independent in field of production, है ना? To produce the goods and services in our own country, in place of buying or importing them from other countries for the first hand, and second, to become the exporter of the goods and services rather being the importer. So that is the ultimate focus. So a package of schemes is being launched by the government of India, which is supportive to each other, which is complementary to each other. Suppose there is a scheme that is called Skill India. Under the Skill India scheme, government provides some training, imparts some skill. So if the person has learned the skills, now he is willing to start a business, but because of lack of capital, he is not able to start a business. So that training will go to the waste. So to support that person who has learned some skill or who has already has some skill, or the person who are willing to start a business in place of searching for job, because in India we have great problem of unemployment. Huge unemployment is there. So all people cannot be given government jobs. Jobs are very limited in number. So what is the solution to this problem of unemployment? That is the entrepreneurship. People should start their own business, so they will not be unemployed, and they even can be will be in a position to give the jobs to others. So government of India started this Startup India scheme. Now it is announced by Prime Minister Narendra Modi from the Red Fort on 15th August 2015. जो Prime Minister की speech होती है Red Fort पे,
इंडिपेंडेंस डे पे उस दिन 15 अगस्त को 2015 को स्कीम प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की, दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया स्कीम. ओके, इट इज एक्शन प्लान टू डेवलप एन इकोसिस्टम टू प्रमोट एंड नर्चर एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री. जो मैंने बताया आपको, बेसिक पर्पज क्या है इसका, टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप, टू हेल्प दोज young entrepreneurs or young people who want to start their own business but are not able to start business because of lack of funds. Okay, so to solve their problem of funds, this scheme was launched by the government of India, that is called Startup India scheme. So this is basically financing scheme, है ना. Startup India scheme is basically a financing scheme which provides funds for startups. Startup means newly started business. The businesses which are going to start under this scheme, they can get the fund. That's why it is called Startup India scheme. Otherwise, business can get fund from many sources. No, but this scheme is specifically launched for those people who are going to start a new business. That's why it is called as Startup India scheme. Is it clear, Sairam? Yes, sir. Now let us see. This is factual. Whatever are the provisions that we have to read. Okay. तो इसमें दिया है, a startup is a business enterprise in the form of private limited company, partnership, limited liability, partnership और sole proprietor. इनमें से कोई भी हो सकता है ना. What is a startup? It may be a private company, it may be partnership firm, or it may be sole proprietors registered in India, which was started less than 5 years ago and have annual turnover of less than 25 crores. जो 5 साल के अंदर अंदर जिन्होंने बिजनेस चालू किया है और जिसका टर्नओवर 25 करोड़ से कम है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इस स्कीम में कौन लोग एलिजिबल है, कौन सा बिजनेस एलिजिबल है. तो द बिजनेसेस व्हिच हैव स्टार्टेड विद इन 5 इयर्स ऑफ टाइम, 15 से 5 साल के अंदर अंदर में जो बिजनेस स्टार्ट हुए हैं वो इसके लिए एलिजिबल है. और दूसरी लिमिट है फाइनेंस की कि उनका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इट शुड हैव एनुअल टर्नओवर लेस देन 25. टर्नओवर मींस सेल्स, पूरे साल की उनकी सेल जो 25 करोड़ से अगर कम है, then they are eligible for this scheme of Startup India. To be eligible for startup, enterprise should not have formed by splitting up or reconstruction and the turnover should not have. तो आप तो याद रखो कि इनमें से कोई भी फॉर्म हो सकता है. इट मे बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये पब्लिक सेक्टर के लिए नहीं कि वो तो गवर्नमेंट पे ऑलरेडी है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, या सोल प्रोपराइटर से बिजनेस हो सकता है. ठीक है. और उसका कंडीशन क्या है, इट मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड मोर देन 5 इयर्स, है ना. 5 साल से पुराना ज्यादा नहीं होना चाहिए. और उसका एनुअल टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 25 करोड़ रुपीस. तो फिर वो इस स्कीम में एलिजिबल है. दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गेटिंग कैपिटल और फंड्स अंडर दिस स्कीम ऑफ स्टार्टअप इंडिया. नाउ various schemes and ways to fund startup by government of India. Okay, so what are the provisions of this startup scheme? No inspection, है ना. तो पहले 3 साल तक के लिए गवर्नमेंट कोई इंस्पेक्शन नहीं करेगी रिगार्डिंग लेबर लॉस एटसेट्रा, है ना. उनको खुद सेल्फ सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा कि वी आर फॉलोइंग ऑल द प्रोविजंस, वी आर फॉलोइंग द डिफरेंट लॉस. नो इंस्पेक्टर, नो गवर्नमेंट ऑफिसर विल गो टू सी दिस startup scheme, startup businesses, that what they are doing, whether they are following labor laws or not, whether they are following tax laws or not. So this will not be inspected for first 3 years. 3 साल तक गवर्नमेंट को लिबर्टी दी कि you can run business in your own way. दूसरा रजिस्ट्रेशन. ओके, इनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. इन एनी फॉर्म यू आर स्टार्टिंग मे बी सोल ट्रेड और पार्टनरशिप और गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च कर दिया है. द गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए मोबाइल ऐप इन अप्रैल 16 एंड पोर्टल दैट विल अलाउ स्टार्टअप टू गेट रजिस्टर्ड इन 1 डे, है ना. तो इसका एक पोर्टल बना दिया, उस पोर्टल पे जाके विजिट करेंगे. स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है, तो वहां जाके आप अपने आप रजिस्टर कर सकते हैं.
देयर विल बी सिंगल विंडो फॉर क्लियरेंस, अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन। तो सिंगल विंडो का मतलब होता है एक ही जगह सारा काम हो जाएगा आपको, यू डोंट हैव टू गो फ्रॉम दिस ऑफिस टू दैट ऑफिस, इस ऑफिस से उस ऑफिस में जाना है, दैट इज नॉट नीडेड टू। आप आजकल एक वर्ड सुना होगा आपने इंडिया का, इसमें इंडिया की रैंक बहुत अच्छी हुई है, इंप्रूव हुई है काफी, हमने उसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सुना है क्या आपने वर्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? सही राम, Yes, sir. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? Sir, electronic job. नहीं नहीं नहीं, और कोई, एनीवन एल्स? See, ease of doing business is the process or strategy followed by the government to make it very easy to run the business. Means earlier there were many permissions, license, and businessman has to visit many offices to take permission. परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर कितना बेच सकते हैं उसकी परमिशन चाहिए, इंपोर्ट करने के लिए परमिशन चाहिए, सो मैनी परमिशंस एंड लाइसेंसेस वर नीडेड, many inspectors used to come to inspect your business. So now government is trying to remove all these hurdles and making it very easy to start and run a business. That is called ease of doing business. Because if we follow strict or difficult procedures in a country, then foreigners don't like to come in that country. Foreign investment is discouraged. तो हमारे अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, अगर आराम से बिजनेस कोई खोल सकता है, चला सकता है, तब तो लोग आते हैं, अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो दे डोंट कम टू अवर कंट्री, they go to another countries. So that's why government has started liberalizing the trade policies, liberalizing the rules and regulations. That is called ease of doing business. So उसमें single window facility एक अच्छा system है. Single window facility means all the clearances, all the permissions, license, whatever is needed, that will be done at one place. You don't have to go to many offices. Don't have to waste your time. Yeah, so one single portal is available and everything will be done on that portal. That is the process of registration. इनकम टैक्स एग्जम्पशन दिया गवर्नमेंट ने इनको, फिर फर्स्ट 3 इयर्स के लिए इनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है ना, दैट इज द इनकम टैक्स एग्जम्पशन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू स्टार्टअप्स। अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको प्रॉफिट कितना भी होता है तो पहले 3 साल तक आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट। ओके, सही राम। कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जम्पशन है, अगर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, कैपिटल गेन टैक्स होता है यानी कोई असेट बेच दिया आपने, उस पर कोई प्रॉफिट हुआ, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स। So that is also being exempted for 3 years. So income tax is exempted for 3 years. Capital gains tax is exempted for 3 years. उसके बाद है benefit in patent and intellectual property. अगर आपने कोई पेटेंट डेवलप किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डेवलप किए है ना, अभी हम बात करेंगे इसके, हमारे टॉपिक में है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मींस द राइट्स व्हिच नीड्स इंटेलेक्ट, है ना, इसमें इंटेलेक्ट की जरूरत होती है आपको डेवलप करने के लिए। पेटेंट कॉस्ट, है ना, तो अगर आपने कोई स्टार्टअप कैन क्लेम एन 80% रिबेट, दैट मींस इफ स्टार्टअप अप्लाइज फॉर पेटेंट गवर्नमेंट विल गिव 80% रिबेट इन फीस। पेटेंट होता है रजिस्ट्रेशन, आपने कोई फॉर्मूला बनाया, कोई डिजाइन बनाया, उसका पेटेंट राइट लेना होता है, पता है क्या आप लोग को? सही राम। इवन सॉन्ग्स का भी पेटेंट राइट होता है, मूवीज का भी पेटेंट राइट होता है, बुक्स का होता है कॉपीराइट, डू यू नो? सही राम। यस सर। Yes, sir. उससे क्या होता है फायदा कि आपका जो फॉर्मूला है, आपका जो डिजाइन है, और कोई आपकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता, इट इज लीगली प्रोटेक्टेड। तो उसके लिए आपको पेटेंट फीस लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है। तो इन केस ऑफ स्टार्टअप गवर्नमेंट विल एग्जेम्प्ट 80% पेटेंट फीस। तो रजिस्ट्रेशन की जो फीस है गवर्नमेंट 80% कम कर दिए, कि 20% इनको देनी पड़ेगी, 80% विल बी एग्जेम्प्टेड, है ना। और जो प्रोसेस है दैट विल आल्सो बी वेरी फास्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट विल बी वेरी फास्ट। अब उसके बाद है जो मेन फीचर है इस स्कीम का, वो फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप। कौन कौन सी फंडिंग स्कीम थे इस स्टार्टअप के अंदर में? तो गवर्नमेंट हैज अनाउंस 10,000 करोड़ फंड फॉर न्यू स्टार्टअप एंड 500 करोड़ क्रेडिट गारंटी स्कीम, है ना।
ये तो अब बदल गया होगा क्योंकि हर साल इसका डाटा बदलता है। फॉलोइंग आर लिस्ट ऑफ 10 फंडिंग ऑप्शंस। कौन कौन से फंडिंग ऑप्शंस है इसमें वो देख लेते हैं। पहला दिया सेल्फ फंडिंग। ये तो सबसे आसान तरीका आपको पता है कि अगर मैं नया बिजनेस चालू करता हूँ, मेरे पास खुद का पैसा है तो मैं खुद का पैसा लगा सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ फंडिंग, है ना। उसमें कोई नया बात नहीं है। तो सेल्फ फंडिंग इज पॉसिबल। उसके बाद है क्राउड फंडिंग एज ए फंडिंग ऑप्शन। व्हाट इज द क्राउड फंडिंग, है ना। इसको पढ़ रहा हूं मैं, क्या देखो। क्राउड फंडिंग इज वन ऑफ द न्यूअर वेज ऑफ फंडिंग ए स्टार्टअप दैट हैज बीन गेनिंग लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी. It is likely taking a loan, pre-order, contribution or investment from more than one person at the same time. This is now crowding work. An enterprise will put up a detailed description of his business on a crowdfunding platform. एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। जैसे आप इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जैसे हम जॉब की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट डालते हैं, ऐसे इसने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। He will mention the goals of the business, plans of making a profit, how much funds he needs, and for what reasons, etc. No? And then investors can read about the business and give money if they like the idea. Those giving money will make online pledges with the promise of pre-buying the product of giving a donation. Anyone can contribute money towards helping a business that they really believe in. तो एक तरह से जो कंपनियां शेयर इशू करती हैं, उसमें प्रोस्पेक्ट डालती थी नेट पे, उसमें सारा डिटेल्स लिखती थी कि हमारा ये बिजनेस है। ऐसे ही क्राउड फंडिंग एक नया प्लेटफॉर्म बना दिया। उस पर जो स्टार्टअप है वो अपनी पूरी डिटेल डालेगा कि दिस इज द बिजनेस, दिस इज द प्लान फॉर फ्यूचर, दिस इज द ऑप्शंस और पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन अवर बिजनेस। सो जो इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, दोज पीपल हु विल मेक द प्लेज, वो उसमें अपनी प्लेज डालेंगे कि वी आर प्लेजिंग टू गिव दिस अमाउंट ऑफ मनी एंड टू बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस स्टार्टअप, कि हम इसका प्रोडक्ट खरीदेंगे इतना और हम इसको इतना पैसा देंगे। सो दिस वे दिस स्टार्टअप विल गेट द फंड एज वेल एज एश्योरेंस फॉर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो उनको पैसा ही मिल जाएगा और उनके प्रोडक्ट की बुकिंग भी हो जाएगी एडवांस में, है ना। फिर आता है एंजल इन्वेस्टमेंट, है ना। एंजल इन्वेस्टमेंट, एंजल तो किसको बोलते हैं, भगवान के जो अवतार होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आ गया। एंजल इन्वेस्टर्स आर दोज इन्वेस्टर्स हु हैव सरप्लस कैश and are interested in investing in some startup, जिनके पास बहुत कैश पड़ा है, and those who are interested in investing in a business, they are called angel investors. So angel investors are individuals with surplus cash and a keen interest to invest in upcoming startups. Angel investors have helped to start up many prominent companies. देखो कितनी कंपनियां में हेल्प की इन लोगों ने, इंक्लूडिंग गूगल, याहू, अलीबाबा। ये सब फाइनेंस की एंजल इन्वेस्टर्स ने, यानी जिनके पास कैश पड़ा था और जो नई कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक थे, दे फंडेड दीज कंपनीज। दिस ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग जनरली अकर्स इन कंपनीज अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ विद द इन्वेस्टर एक्सपेक्टिंग अप टू 30% इक्विटी। दे प्रेफर टू टेक मोर रिस्क इन्वेस्टमेंट फॉर हायर रिटर्न्स। तो जो रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, वो इसमें स्ट्रेटेजिक शेयर खरीद लिए, 30% के आसपास शेयर खरीद लेते हैं, जिससे उनकी कंपनी पे कंट्रोल हो जाए। एंड दे परचेज द शेयर्स ऑफ और दे इन्वेस्ट द फंड्स इन दिस स्टार्टअप्स, है ना। सो मेनी स्टार्टअप्स आर बीइंग फंडेड बाय दीज एंजल इन्वेस्टर्स। गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस, ओके। वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको वेंचर कैपिटल चाहिए तो आप अपना आईपीओ लेके आ जाइए, है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर शेयर्स का, और यू इश्यू द शेयर्स एंड यू विल गेट द कैपिटल फॉर योर वेंचर, ओके। सो वेंचर कैपिटल आर प्रोफेशनली मैनेज फंड्स इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट हैव ह्यूज पोटेंशियल। तो कुछ लोग वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं कि जो अच्छी कंपनियां हैं, जिनका फ्यूचर अच्छा है, उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट लाएंगे, नेट पे डालेंगे अपना प्रपोजल, so these will purchase your shares, they will invest in your shares because they are ready to invest in good projects, so they are called venture capitalist, okay। उसके बाद होता है get funding from business incubators and accelerators। ये कौन होते हैं? अर्ली स्टेज बिजनेस कैन कंसीडर incubator and accelerator program as a funding option. It is found in almost every major city. These or
प्रोग्राम असिस्ट हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप बिजनेस एवरी ईयर। ये मुझे समझ में नहीं आया क्या मतलब, इसके बाद में समझाऊंगा जब समझ में आएगा तो। फंडिंग फ्रॉम बिजनेस इंक्यूबेटर्स, कोई होते होंगे ये लोग जो छोटे छोटे बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, कोई इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली। रेज फंड्स बाय विनिंग कॉन्टेस्ट है ना, ये क्या है? पता नहीं क्या बिजनेस। रेज फंड्स बाय विनिंग कॉन्टेस्ट मतलब क्या होता है? Increase in the number of contests has tremendously helped to maximize the opportunities for fundraising. It encourages entrepreneurs with business ideas to set up their own business. In such competition, you either have to build a product or prepare a business plan. पता नहीं है तो कुछ ऐसा कॉन्टेस्ट रखते हैं, क्या रखते हैं समझ नहीं आ रहा इसका। रेज मनी थ्रू बैंक लोन, ये सबसे अच्छा है। नॉर्मली बैंक्स आर द फर्स्ट प्लेस है ना दैट एंटरप्राइज गो टू टेक द लोन्स। तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन्स एनबीएफसी से ले सकते हैं ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से ले सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन गिव, एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम टू ऑफर स्टार्टअप है बैंक ऑफ आइडिया एंड इनोवेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री माइक्रो डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा है ना, 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है मुद्रा स्कीम में। सिडबी से लोन ले सकते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम दी है फाइनेंसिंग की इनको है ना। अब मुझे वो नहीं मिला, इसमें एक कैटेगरी होती है शिशु किशोर, और एक इसमें ही है स्टार्टअप इंडिया, वो 3 कैटेगरीज बनाई है गवर्नमेंट ने, शिशु किशोर और एक क्या पता नहीं तीसरा। उसमें गवर्नमेंट लोन देती है, इसमें उसका लोन की अमाउंट के हिसाब से उसका नाम दिया है। शिशु यानी छोटा बच्चा, किशोर यानी उससे छोटा बड़ा एडल्ट जो होता है, किशोर एडल्ट से थोड़ा बड़ा होता है, और 3 नाम है वो हम बताऊंगा मैं आपको, 3 मिल जाएंगे। तो 3 स्कीम गवर्नमेंट के हैं, उसमें लोन का अमाउंट फिक्स है कि शिशु स्कीम में कितना लोन मिलेगा, किशोर स्कीम में कितना मिलेगा, और दो तीसरा एडल्ट स्कीम है उसमें कितना मिलेगा। दिया द स्टार्टअप स्कीम्स। तो बेसिक पर्पज ऑफ स्टार्टअप इंडिया इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, टू मेक द पीपल मोटिवेटेड टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। ठीक है साई राम, ये बच्चा है कि क्लास में के सब चले गए? ओके 10-11% आर देयर। ओके साई राम, कुछ समझ में आया आपको स्टार्टअप में? Yes, sir. सो दिस, ये तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा, सर्च करेंगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम तो सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि नया स्कीम है अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च डालेंगे तो उसमें मिल जाएगा है ना, इसके सारे प्रोविजंस। हाँ, शिशु किशोर और तरुण, तरुण होता है एडल्ट है ना, शिशु यानी बहुत बच्चा, किशोर यानी शिशु मतलब मान सकते हो अप टू 6 इयर्स ऑफ एज, किशोर मीन्स जो आपका क्या बोलते हैं टीन एज, अप टू 14-15 इयर्स ऑफ एज, एंड तरुण होता है 20 इयर्स एंड अबव, 18 इयर्स एंड अबव, तो तरुण में आता है। तो ऐसे 3 नाम दिए, शिशु किशोर एंड तरुण, ये 3 स्कीम इसने गवर्नमेंट में दी है। उनके अमाउंट अभी बताऊंगा कितना कितना, सारे के अमाउंट फिक्स किया है कि इतने रुपए तक का लोन शिशु स्कीम में ले सकते हैं, इतने तक का किशोर में ले सकते हैं, और इतने तक का तरुण में ले सकते हैं। सो दैट इज द स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू स्टार्ट इन न्यू बिजनेस। ठीक है, अब है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें क्या क्या आता है देखो, आपको बताता हूँ, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है हमारी। कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। ओके, तो दैट इज, आजकल बड़ा फोकस है इसके ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इमर्जिंग एरियाज ऑफ बिजनेस, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। जैसे आपने कोई फॉर्मूला बनाया, कोई डिजाइन बनाया, कोई सॉन्ग कंपोज किया, कोई बुक लिखी नया, कोई स्क्रिप्ट लिखा, दैट ऑल इज अ पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना। सम क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी बहुत है इसके अंदर, इट इज अ क्रिएटिव पार्ट। सो यू हैव क्रिएटेड समथिंग न्यू बाय योर ओन दैट इज कमर्शियली वायबल, दैट कैन बी कमर्शियली यूज्ड टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना। सो यू हैव क्रिएटेड, योर डिजाइन समथिंग new, different, that have commercial value. It can be used to earn profit, it can be sold in the market profitably, that is called as intellectual property. तो वो आपकी intellectual property है। तो एक हमारा पार्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसमें हमारे पास 2 टॉपिक बचे अभी, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और दूसरा स्मॉल बिजनेस। वो मैं अभी निकालता हूँ, आज उसका नया डेफिनेशन वो मिल जाए तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कि अभी नया जो
लिमिट चेंज की है गवर्नमेंट ने। इसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम 3 साइज की इंडस्ट्री हमको पढ़ना है। माइक्रो में कितना इन्वेस्टमेंट लिमिट है गवर्नमेंट का, मीडियम में कितना है और स्मॉल में कितना है। लार्ज इंडस्ट्रीज चैप्टर का पार्ट नहीं है, तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट, एमएसएमई एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट, इसलिए उसका नाम दिया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट 2006। उसने नई डेफिनेशन दी थी। अब वो डेफिनेशन अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज की है। जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम लॉन्च की कोरोना टाइम में गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपीज का पैकेज दिया गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को। उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में वो डायरेक्ट पैसा नहीं बांटा है कि ऐसे ही कोई भी ले लो पैसा, डोनेशन नहीं है वो, है ना, डोनेशन नहीं है वो। ऐसे दिया है कि आपको इस स्कीम में अगर आप पैसा लेंगे तो इतने रुपए का फायदा आपको हो जाएगा। तो ऐसे 20 लाख करोड़ रुपीज की हेल्प गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को की है। और उसका मेजर शेयर गवर्नमेंट ने दिया है एमएसएमईज को, शॉर्ट फॉर्म होता है एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बिकॉज एमएसएमईज आर द मेन टूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। They generate a lot of employment, plus they are using domestic resources। हाँ, जो मोदी का भी स्लोगन आया, वोकल फॉर लोकल, सुना है क्या आप लोगों ने? एक नया स्लोगन दिया मोदी ने, वोकल फॉर लोकल, इट्स बिकमिंग वेरी पॉपुलर। सही राम, सर। वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या होता है कि फील प्राउड इन योर ओन प्रोडक्ट्स एंड प्रोपोगेट, है ना, टॉक अबाउट योर ओन प्रोडक्ट, बाकी लोग को भी बताओ कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं। वोकल फॉर लोकल, इन प्लेस ऑफ बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, अपने देश में सामान बनाओ और उस पर प्राउड करो, टेल अबाउट दैट प्रोडक्ट टू अदर्स। चाइना का सामान मत खरीदो। पता है आपको इस बार दिवाली पे क्या हुआ? चाइना का पूरा दिवाला निकल गया। पहले क्या होता था, इतने क्रैकर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इतने जो आते सब चाइनीज प्रोडक्ट। इस बार मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट बहुत कम मिले हैं, आई नहीं चाइना के प्रोडक्ट, मंगाए नहीं लोगों ने। दिए तक चाइना से आते थे हमारे यहाँ, है ना। तो अभी क्या हुआ, सब लोकल बनाया हमारी कंट्री को, तो काफी लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला उसमें। सो दैट वोकल फॉर लोकल इज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सफिशिएंट कंट्री, सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री। सो दैट वी आर ट्राइंग टू मेक, और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं हमारे एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसमें सबसे आगे चल रहा है योगी आदित्यनाथ। सबसे ज्यादा उसने स्कीम्स अपने यहाँ स्टेट में लॉन्च किए हैं, उत्तर प्रदेश में, अंडर द स्कीम। सो मेनी न्यू स्मॉल यूनिट्स आर बीइंग सेट अप। योगी ने एक नया स्कीम चालू किया, अभी पता है कि आपको? काफी झगड़ा चला, एक नया फिल्म सिटी बना रहा है योगी, स्टार्टिंग ए फिल्म सिटी। यस सर। फिल्म सिटी कहाँ है अभी हमारी? फिल्म सिटी अभी कहाँ पर है? जितना मुंबई भी है वो कहाँ पर सेंट्रलाइज है? पूरे मुंबई में, हैदराबाद। मेनली तो मुंबई में। हैदराबाद में नॉर्थ, नहीं। हैदराबाद हो तो साउथ इंडियन फिल्म आ गई, होता है ना, तो चेन्नई में भी है, हैदराबाद में भी साउथ इंडियन फिल्म है वो तो। नॉर्थ इंडिया के लिए तो मेन सेंटर क्या है हमारा? मुंबई है। हाँ, मुंबई। तो अभी यूपी सेटिंग अप ए फिल्म इंडस्ट्री इन नोएडा, नोएडा में बना रहे हैं। यूपी, यूपी से है ना, नोएडा इज द पार्ट ऑफ यूपी। तो नोएडा में बहुत बड़ा एक एरिया लोकेट किया उसके लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए। एंड इवेंट टू मुंबई आल्सो टू इनवाइट द इन्वेस्टर्स। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनको इनवाइट करने गए थे वो मुंबई कि आप आइए और हमारे यहाँ यूपी में हम आपको जगह देंगे, स्टूडियोज बना के देंगे, फैसिलिटीज देंगे, यू स्टार्ट योर इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश। ये फिल्म बनाने का काम उत्तर प्रदेश में चालू करिए। तो ये स्टार्टिंग ए न्यू फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म सिटी इन उत्तर प्रदेश। तो दिस इज पिकिंग अप, बहुत इसको मोमेंटम मिल रहा है पूरी स्कीम को, अंडर द स्कीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत। गवर्नमेंट ने बहुत पैसा दिया है, एंड फर्दर इन फ्यूचर आल्सो गवर्नमेंट कीप ऑन फंडिंग दिस स्कीम। ठीक है। तो आप में से भी अगर कोई बिजनेस कर रहा है और बिजनेस करना चाहता है, तो आपको अगर लगता है कि वी नीड फंड्स, तो सब्सिडीज बहुत है इसमें, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है ना। तो वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो स्टार्टअप स्कीम, आत्मनिर्भर भारत स्कीम, ये सारी एमएसएमईज पे फोकस है, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, so that's all for today. Again we will discuss tomorrow in the class. ठीक है। साई राम, let us have शांति पाठ, then you can leave. ओम
शांति शांति शांति। साईराम। सर हाँ जी। आराम से। सर हाँ जी। सर जो आपने अभी बताया सर वो आप एक बार भेज दोगे क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे? ये बुक में नहीं हाँ, है। वो पूरा भेजूंगा व्हाट्सएप पर, पूरा भेजूंगा इसकी। वो बना के PDF बना के भेजता हूँ आपको, है ना? ठीक है। ठीक है सर। सायरन सर। साईराम सर।